Hello and a warm welcome to South Asia Today, where we bring you in-depth insights into the key events shaping South Asia. I am Akansha Parimu and here are today's top stories. India's walls turn into canvases from tradition to urban expression. Nepali migrants rebuild lives through cow farming. Development push transforms J&K's Naushera as CM launches key projects. Let's begin the show. Imagine a city where every street is washed in shades of blue, where rooftops and walls blend into a stunning living canvas. Welcome to Jodhpur, India's famed blue city. But these vibrant blue hues are more than just visually striking. They have become the city's signature and a powerful draw for travelers from around the world. Let's explore how these iconic blue lanes are capturing global attention and redefining Jodhpur's identity. Walking through the lanes of Jodhpur feels like stepping inside a painting. Blue-washed houses, winding narrow streets, and walls adorned with traditional art create a scene that's both timeless and alive. Blue-washed houses, winding narrow streets, and walls adorned with traditional art create a scene that's both timeless and alive. Every turn reveals a new frame, every wall tells a different story. It's no surprise that travelers from India and around the world don't just come here to see the city, they come to truly experience it. I saw a lot of animals, a lot of symbols of India, a lot of cultural designs, and I really like it. And I think it fits perfectly with the blue color. I like how they depict history. They're not just random pictures. They depict the history of Jodhpur, and it's fascinating history to me that I would never know otherwise. So when I walk the city streets, I can see the history of your city right there on the walls. I don't have to go to libraries or museums. It's right there for me. Interestingly, Jodhpur's blue houses began as a practical choice. The color was believed to keep homes cool, repel insects, and was once linked to Brahmin identity and devotion to Lord Shiva. But over time, this tradition has taken on a new life. Today, these blue lanes have become a global visual icon, especially in the age of social media. Old homes are now turning into cafes, handicraft shops, and art spaces, creating new opportunities for locals. In many ways, a single color has connected tradition with tourism and tourism with livelihoods. टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे जो इंडियन जो खुद का यहाँ का राजस्थान है जोधपुर के जो शूटर मतलब शूट कराते हैं वो खुद भी यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा शूट करवाते हैं अपने यहाँ पे ताकि है ना उनको एक ऐसी मतलब आगे ऐसे मतलब वो फेमस हो सके और आगे ना लोगों को भी बता सके कि है ना यहाँ की जो लोकेशन है जो भी यहाँ का ब्लू पेंट है वो सब है ना लोग जाके देख सके. To preserve this unique identity, the Jodhpur Municipal Corporation is actively working to protect and maintain the blue heritage of the old city. Several initiatives are underway to restore and enhance these historic lanes. As a result, Jodhpur's iconic blue streets continue to seamlessly connect history, culture, and tourism, keeping the city's timeless charm alive. These young artists have taken art beyond galleries and onto the streets of Delhi. Meet Akbar, better known as Art Akbar. With a brush in hand, he turns ordinary walls into a vibrant open-air gallery. For artists like him, every wall is a canvas and every stroke tells a story, bold, modern, and full of meaning. एज एन आर्टिस्ट आपका माइंड ना बाउंडेशन में नहीं रहता. हम चाहे वो ब्लैंक चीज़ हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे कोई भी कलर हो, उन कलरों में ना हम दूसरे कलर अपने आप ऑब्जर्व हमारी आंखें ऐसे ना हम ब्लैंक चीज़ में भी ना इतने सारे कलर देख पाते हैं.
अभी के टाइम पे क्या है ना, म्यूरल ट्रेंड पे हो गया है, तो आप कहीं भी जाओ ना, एक दिल्ली की एक अलग ही ब्यूटी और वाइब आने लगी है। Street art and graffiti are rapidly transforming Delhi's urban landscape. What once defined global cities is now reshaping India's own identity. These vibrant walls don't just blend into the background, they make people stop, look, and engage. From admiring the art to capturing and sharing it, the experience has become a major draw for international visitors as well. आप जब भी किसी आर्ट फॉर्म को देखते हो तो इट्स अबाउट कनेक्टिंग थ्रू इट। आप उससे कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कौन से अलग अलग चीज़ों को महसूस कर सकते हो। एंड अभी हम AI और चैट GPT के उसमें जी रहे हैं, तो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को स्टिल देखना बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर उनको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, दैन वो अपने आर्ट को वीडियो रील के अकॉर्डिंग बनाते हैं, दैन वो शेयर करते हैं। From Jodhpur's traditional blue walls to Delhi's bold graffiti, one message stands out. When art moves to the streets, it transforms the city. These walls are no longer just brick and cement. They have become identity, expression, and opportunity, especially for the youth. In a changing India, sometimes tradition paints the city, and sometimes young artists paint the future. After years as a migrant worker in the Gulf, Rammani Nupane returned to Nepal seeking a better life. Today, dairy farming in Makwanpur has given him stability, savings, and time with family. Supported by local initiatives ensuring regular income, more farmers are turning to this sector. A story of resilience, return, and rebuilding livelihoods through agriculture. Rammani Nupani's day begins at dawn and ends long after dusk, all within the confines of his cowshed in Nepal's Makwanpur. He spent 6 to 7 hours daily caring for his 4 cows, especially his prized Holstein breed, which inspired him to return to Nepal and start his own venture. But his journey wasn't easy. Rammani spent 7 years in the Middle East as a migrant worker, enduring harsh conditions and a long separation from his family, all in pursuit of a better future. Over time, the struggle took its toll. He chose to come back home. Through dairy farming, he has rebuilt his life with dignity, stability, and purpose. A story of resilience and the courage to return. म विगत 6-7 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गइरहँदाखेरि त्यहाँको दुःख, त्यहाँको परिश्रम सम्झिँदाखेरि र अहिलेको यहाँको दुःख परिश्रम गरिरहँदाखेरि म चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यहाँभन्दा नि यहाँ सन्तुष्ट छु। होला विगतमा त्यहाँ मैले 1-1.5 लाख कमाउँथेँ होला, र त्यो भन्दा पनि मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर 50,000 4वटा गाई पालिरहेको छु र आफैले गरिरहेको छु भन्दा 50,000 कमाइरहेको छु भन्दा यहीँ सन्तुष्ट छु। किन छु भन्दा आफ्नो परिवारको साथमा बस्न पाइरहेको अवस्था छ। Rammani's dream of a better life has finally found direction in dairy farming. After years of rigorous effort and several failed business experiments, his journey has been far from easy. He tried running a photo studio and even a grocery shop, but success remained out of reach. A regulatory change by his local government eventually drew him towards the dairy business, and that decision changed everything. Today, his efforts have found stability in the cowshed, a journey shaped by struggle, resilience, and the will to keep going. यस ठाउँमा अहिले गाई पाल्न थालिसकेपछि यहाँका चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ गाई पाल्न चाहिँ एकदम नजिक भएर लागिसकेपछि चाहिँ अहिले हामीले वडा स्तरमै चाहिँ भेटनरीको कृषिको तपाईको हाम्रो चाहिँ भेटनरी कृषिको ज्ञान भएको सरहरू यस मनरी गाउँपालिकाले कर्मचारी कति 6औं तह हैन 5औं तहको चाहिँ हाम्रो पशु प्राधि यस ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँले घर-घरमा गएर चाहिँ Nepal relies heavily on agriculture. According to the 2021 National Agricultural Census by the Central Statistics Office, around 1.7 million households are engaged in cattle farming across the country. In Manahari rural,
Municipality Ward Number 1, a unique approach is encouraging dairy farming. The local council ensures monthly payments to farmers for milk collected at a local center. This initiative is boosting farmer confidence and providing financial stability. Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. Tesla has introduced a 6-seater version of its Model Y in India, aiming to expand its presence in the country's competitive EV market. Senior Director Isabel Fan said the SUV caters to Indian families and road conditions. Priced around 62 lakh rupees, the Model YL targets premium buyers. Through high import duties continue to impact affordability and sales. Indonesia has commenced real-world testing of its B50 biodiesel, a blend of 50% palm-based fuel and 50% diesel, as it moves to increase renewable energy use. Energy Ministry official Enya Listiani Devi said the nationwide rollout is targeted for July 1. Vehicles including buses and trucks are undergoing road trials to assess performance and durability. Officials noted stricter quality standards for B50 while drivers reported stable performance and expressed optimism about its environmental and efficiency benefits. In Russia, rising uncertainty has led more people towards mysticism. Natalia Malinovskaya claims to help clients with love issues and protection rituals, with many recent clients being soldiers in the Ukraine conflict, seeking emotional reassurance. Experts link this trend to anxiety driven by war, economic stress, and global tensions. Surveys indicate a sharp rise in belief in magic, with people buying crystals and amulets. However, the trend faces criticism from the Russian Orthodox Church and lawmakers over concerns of exploitation and misinformation. A renewed push for progress is transforming the border regions of Jammu and Kashmir. Chief Minister Omar Abdullah visited Nowshera in Rajouri, inaugurating key projects aimed at strengthening healthcare and boosting connectivity. These initiatives signal a firm commitment to inclusive development, bringing improved services, better infrastructure, and greater opportunities to the people of this vital region. Take a look. Bringing relief and improved connectivity to border communities, Omar Abdullah visited Nowshera and inaugurated key development projects. The sub-district hospital has been upgraded to a 100-bedded facility, significantly reducing congestion and improving patient care for residents, including those from LOC-connected areas like Jhangar, Kalsiyan, Saria and Bawani. At the same time, the road linking NH44 to Nowshera via Rajal 30 was also inaugurated, easing travel on the Jammu-Poonch route and strengthening connectivity, marking a major step towards holistic regional development. जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम बाकी जगहों के करो में की जो ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों को ये ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बहुत अहम महकमे संभाले हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अपने काम के तरफ तवज्जो देते देते अपने इलाकों के भी ये खिदमत कर रहा है और इस खिदमत का नतीजा आज ये दो चीजें हैं। एक सड़क का हमने उद्घाटन किया जो शानदार सड़क बनी हुई है, और एक अस्पताल जो 11 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। मकसद ये कि हम अपनी कुर्सी, अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें अपने लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा आसान जिंदगी करने के लिए। ये मकसद में हमारा यहाँ आने का। हाँ, कि स्कूल को बेहतर कर, अस्पतालों को बेहतर कर, यहाँ के सड़कों को बेहतर कर, यहाँ की बेरोजगारी को कम करें, यहाँ की गुर्बत को कम करें। A new phase of development is reshaping life in border areas as improved infrastructure boosts both access
and opportunity. In Nowshera, residents are witnessing tangible change with better healthcare facilities and smoother road connectivity. The upgraded hospital is enhancing medical support for surrounding villages, while the newly opened road corridor connecting NH44 via Rajal 30 is reducing travel time and improving mobility across the Jammu-Poonch stretch. Together, these initiatives reflect a focused push towards strengthening essential services, improving daily life, and bringing long-term growth to the region. आज वो नौशहरा में आए और उन्होंने एक हमारा जो राजल थाती रोड था कोई 2.5-3 किलोमीटर का था, उसका आज उद्घाटन किया और साथ में ही एक हॉस्पिटल था जो 11-12 साल से बंद पड़ा हुआ था काम, आज उसका भी उद्घाटन किया है। तो लिहाजा ये दो बड़े अहम, एक रोड और एक जो हॉस्पिटल बड़ा अहम प्रोजेक्ट थे जो नौशहरा के लोगों के लिए बहुत ज़रूर थी, तो आज उसका उद्घाटन किया। मैडम सकीना इट्टू ने एक डिग्री कॉलेज सेरी में दिया है और उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस के गई हैं और डिग्री कॉलेज हमारा जो है नौशहरा का, उसके लिए एक बस का भी अनाउंसमेंट करके गई हैं। तो लिहाजा एम्बुलेंस तो आ गई है और डिग्री कॉलेज की बस अगले महीने आ जाएगी और जल्द ही हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे सेरी डिग्री कॉलेज का। तो इसलिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था। A vibrant wave of optimism and celebration filled the public rally in Nowshera as thousands of people came together to welcome transformative development initiatives. Chief Minister Omar Abdullah received heartfelt appreciation for his continued efforts towards progress in the region. Health and Education Minister Sakina Ittu's announcement of a long-awaited degree college for Seri block brought immense joy, while the flagging off of a new ambulance for SDH Nowshera further strengthened healthcare services and hope for better access and care. आज जो ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, ये हॉस्पिटल एक दरीना डिमांड थी लोगों की कि इसे कंप्लीट किया जाए, यहाँ क्रिटिकल एम्बुलेंसेस दी जाए। वो साथ लेके आई थी बहन सकीना इट्टू, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही जो रोड का उद्घाटन, एक रिकॉर्ड टाइम में रोड पूरी करना और लोगों के हवाले करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज दो बड़े अहम प्रोजेक्ट थे जिनका उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें जो एक रोड था और दूसरा हॉस्पिटल जो एक नाम का हॉस्पिटल रह गया था, लेकिन वो हॉस्पिटल आज उसका काम पूरा हुआ। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है नौशहरा के लिए और बहुत बड़ी सौगात है आने वाले हमारे कई पुश्तों के लिए। ये एक ऐसा गहना है कि जो हमारे सेहत के लिए ये जो आज इंस्टीट्यूशन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। A positive wave of development continues to transform Jammu and Kashmir, reflecting steady progress across key sectors. Upgraded hospitals, new educational institutions, and strengthened road infrastructure highlight the region's overall development, marking a clear step forward in improving accessibility, public services, and quality of life for people across Jammu and Kashmir. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, anger is mounting as employees take to the streets, with protests centered at the Central Press Club, exposing deep-rooted injustice and neglect. Workers who have served for decades are still denied basic rights, forcing them to protest for dignity and survival. The Pakistan government's failure to honor its promises once again highlights a pattern of apathy where citizens are left struggling while authorities remain indifferent. We have a report. Protests have intensified in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as employees take to the streets over the government's failure to implement an agreement reached last year. Workers, many of whom have served for decades in temporary and contract roles, are demanding permanent status and basic job security. Despite repeated assurances, no concrete action has been taken for months, forcing them to protest and highlight their long-standing grievances against continued neglect. रोजगार बचाओ तहरीक
सिर्फ स्केल 1 से 15 तक के मुलाजमीन की है। और जैसे पहले भी बात हो चुकी है, हमारा मुतालबा है कि हमें फिल फॉर मुस्तकिल किया जाए। हमारी सर्विसेज 20-20 साल हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो हमारी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आज चूँकि हमने कोर कमेटी का इजलास बुलाया था, इसके बाद अगर 7 अय्याम के अंदर हुकूमत ने हमें मुस्तकिल न किया तो जैसे बामुताबिक माहिदा 1 साल पहले हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अगर आप ये दिखाएं तो ये मेरी जो लालटेन है ये इसलिए है कि रियासत के अंदर इस वक्त अंधेरा है और दिन में अंधेरा है। हम रोशनी हम ये लाइट जला के रोशनी पैदा करना चाह रहे हैं। और ये जो रोटी है, ये रोटी लगाने का मकसद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। हम ये रोटी मांगते हैं। रियासत के अंदर रोटी मांगना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म करने के लिए 100 बार तैयार हैं। हुकूमत ने ये कहा अगर 30 दिन के अंदर आपका मुतालबा पूरा ना हुआ तो आप इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने का हक महफूज रखते हैं। फिर भी 1 साल गुजर चुका। शुनिए किस्मत कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये हमारे धरने में भी आए। इन्होंने कहा हम तब किसी में कब आया हूँ कि इसलिए कि मैं उस चीज़ का वो वादा करता हूँ जो पूरा हो सके। लेकिन 1 साल गुजर गया, फिर अल्लाह ने उनको मौका दिया। वो इस टाइम रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर बरजमान है। हम उनसे पूछते हैं कि 12 दफ़ा हम आपसे मिले, आप हमें यकीन दहानी से रुकरा देते हैं और हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं करते। The crisis reflects the deep hardships faced by employees in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, many of whom have spent decades in service without job security or financial stability. With rising inflation and limited opportunities, sustaining families has become increasingly difficult. Despite years of work, they remain deprived of basic rights, exposing a system where those who serve the public continue to struggle for dignity and recognition. अब हुकूमत को 7 दिन का टाइम देते हैं अज़हारे यकजहती के तौर पे हुकूमत के साथ कि हमें अगर हुकूमत 7 दिन के अंदर कोई प्रॉपर हल नहीं निकालती, कोई हमें मुस्तकिल नहीं किया जाता, तो उस सूरत में इंशाल्लाह 7 दिन बाद हम हकीका आज़ाद कश्मीर की 32 तंजीमात के साथ मिल के इंशाल्लाह और 50 तंजीमात जो पाकिस्तान में हमारी हकीका की मौजूद हैं, हम पार्लियामेंट के सामने यहाँ से लॉन्ग मार्च करते हुए ख़वातीन और बच्चों वाले के साथ और धरना देंगे। और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं हो जाते। हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से दोबारा इस स्टेज के तवस्त से मुतालबा करते हैं कि हस्ब वादा जो उन्होंने और उनकी कैबिनेट ने सबक दौरे गवर्नमेंट में और उस दौरे गवर्नमेंट में जो वादे वाइद किए, इन ख़वातीन और मासूम बच्चों के साथ भी जो वादे वाइद किए उसको पूरा करते हुए बिलफोर इन आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन गैर जीदा स्केल 1 to 15 को, जिसके लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है बल्कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के एक एग्जीक्यूटिव आर्डर की ज़रूरत है, उसके तहत मुस्तकिल किया जाए। The situation highlights the broader hardships faced by people in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, where rising inflation, unemployment and poor public services continue to strain daily life. Basic necessities like stable electricity, water supply and healthcare remain inconsistent, adding to public distress. This protest is just one example of a larger crisis, where citizens across the region are compelled to raise their voices against prolonged neglect and systemic governance failures. As we wrap up today's episode of South Asia Today, we thank you for joining us. We'll return next week at the same time with more insights and updates. This is Akansha Parimu signing off on behalf of our entire team. Until then, stay safe and goodbye.